हाँ जी, देखिए हमने कल जैसे हम ग्राफ डिस्कस कर रहे थे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने 3 डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट देखिए एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दैट इज फॉर द एक्सेलरेशन व्हिच इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। तो नेक्स्ट इज द ग्राफ, पार्टिकल इज मूविंग such that its acceleration is increasing rightwards. जैसे आपको याद हो तो हमने 3 ग्राफ कर लिए थे, जिसके अंदर क्या चल रहा था, 3 ग्राफ्स के अंदर हमने देख लिया था कि सबसे पहला ग्राफ देखा था अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगला वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड इट इज मूविंग, कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज इन राइट डायरेक्शन। नेक्स्ट इज इट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन लेफ्ट डायरेक्शन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन left direction. Next is particle is moving such that its acceleration is increasing rightwards. नेक्स्ट केस आप कर सकते हो इसको ग्राफ का, मतलब कि इसमें क्या होगा, जैसे हमारे पास पार्टिकल ये है, उसकी वेलोसिटी मान लो ये पोजीशन है x इज इक्वल टू एक्स नॉट, कुछ भी है, x इज इक्वल टू 0 भी ले सकते हो आप, इनिशियल पोजीशन, उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और द वेलोसिटी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन, मतलब एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, जो a है इधर की तरफ a इज इंक्रीजिंग, वो इंक्रीज कर रहा है। तो इस केस में देखो ग्राफ में क्या पैटर्न बनेगा, हमारे पास हमें पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसका स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन, इसका मतलब स्लोप इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। जैसे ये मेरे पास ग्राफ है, इसका स्लोप क्या करेगा, अगर इंक्रीज करे, ये जैसे यहां पर मान लो पॉइंट, मान लो इनिशियल पॉइंट, ये मेरे पास मान लो कोई फाइनल पॉइंट, तो मैं ये दिखा सकता हूं ना कि दिस इज द स्लोप अल्फा, ये एंगल इज अल्फा 1, दिस एंगल इज अल्फा 2, दिस इज विच ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वी हैव टेकन द एट 2 पॉइंट्स दैट इज आई एंड एफ, तो मैं बोल सकता हूं here tan alpha 2 is greater than tan alpha 1, tan alpha 2 अगर tan alpha 1 से ग्रेटर है तो मैं बोल सकता हूं कि एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट इज ग्रेटर देन द एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट। तो एक्सेलरेशन एट a instantaneous at final point it is greater than a instantaneous at initial point. नेक्स्ट इज, इसको आप 4th नंबर भी दे सकते थे, 5th, पार्टिकल इज मूविंग with decreasing acceleration rightwards. जैसे हमारे पास मान लो फिर वही है, ये कोई पोजीशन है, अब पार्टिकल क्या कर रहा है, इट इज मूविंग विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ये किसी वेलोसिटी से मूव करता है v से, इसकी एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रही है। इस केस में क्या होगा, द ग्राफ विल बी लाइक दिस। क्यों, क्योंकि अगर इसके किसी भी 2 पॉइंट पे हम स्लोप लेंगे,
इस पॉइंट पे अगर स्लोप लेंगे तो इस पॉइंट पे जो स्लोप है इसके लाइन के लिए बनेगा, और अगर इस पॉइंट पे स्लोप लेंगे, मान लो इस लाइन पे पॉइंट पे स्लोप कुछ ऐसा बनेगा. वी कैन इजिली ऑब्जर्व दिस एंगल इज अल्फा 1, दिस एंगल इज अल्फा 2. This is let's suppose the initial position, this is let's suppose the final position. तो यहां पर क्या है, यहां पर अल्फा 2 जो है tan alpha 2 is greater than tan alpha 1, मतलब acceleration that is final. इसको 2 ले लो, आप इसको 1 ले लो, तो tan alpha 1 is greater than tan alpha 2. मतलब acceleration initial it is greater than acceleration final. तो इस टाइप के डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ पॉसिबल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ पॉसिबल है. जैसे ये हमने कुछ 5 तरीके के अलग अलग वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख लिए. नेक्स्ट, next is the acceleration time graph. Acceleration time graph. देखो हमें पता है कि व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. इट इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. मतलब चेंज इन वेलोसिटी इज dv dv वेक्टर बाय dt. So what is dv vector? Instantaneous acceleration into dt. मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, it will be equal to area bounded by acceleration versus t curve. इसको आप दिखाना चाहो तो मैंने मान लो कोई भी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ लिया, एनी टाइप ऑफ ग्राफ, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग लाइक दिस. इट इज एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ. तो इसके लिए मैं डायरेक्ट देख सकता हूं, अगर मेरे पास ये है मान लो इनिशियल पोजीशन, ये है मान लो फाइनल पोजीशन, ये टी आई, ये टी एफ, तो इसके बीच में जो चेंज इन वेलोसिटी है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, एरिया बाउंडेड बाय
ए वर्सेस ए कर्व, इसका जो एरिया बाउंडेड होगा, दिस एरिया बाउंडेड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड एरिया बाउंडेड इज कॉल्ड व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी मैग्नीट्यूड। क्लियर है? Of course, here velocity is a vector quantity. It is a vector quantity and in it area bounded by graph is taken as positive and below x-axis is taken as negative. जैसे एग्जांपल ले लेता हूं मैं, मान लो मेरे पास ये ग्राफ गिवन है, कोई एक्सेलेरेशन का ग्राफ है, मान लो ये हमारे पास इनिशियल पोजीशन है, हमको क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी। ये एरिया एक बनेगा, एक ये एरिया बनेगा, दिस एरिया इज व्हाट, मान लो ये एरिया आपने A1 ले लिया, ये एरिया आपने A2 ले लिया, तो चेंज इन वेलोसिटी इज A1 माइनस A2, पॉजिटिव एरिया माइनस नेगेटिव एरिया, A1 माइनस A2। नेक्स्ट, next is different types of acceleration versus time curve। जैसे फर्स्ट इज पार्टिकल हैविंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसके एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा बन सकता है? सिंपली
The acceleration time graph is simply the constant acceleration. Next, second. Particle having constant increasing acceleration towards right. Constant increasing acceleration मतलब this A versus C curve है and acceleration is increasing. So this is the way the acceleration is increasing. अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ tan थीटा क्या होगा? डेल्टा ए बाय डेल्टा डी. Decreasing acceleration constant decreasing acceleration towards right. एक्सेलरेशन तो राइट की तरफ ही है लेकिन वो डिक्रीजिंग है. वो कैसे है? डिक्रीजिंग. तो इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ. डिक्रीज कर रही है. लीनियरली डिक्रीजिंग है. क्लियर है? लिखेंगे इसको. नेक्स्ट, नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स. अब इसके ग्राफ के ऊपर बेस्ड हम प्रॉब्लम्स देखेंगे. जैसे पहली प्रॉब्लम देखो ग्राफ के ऊपर बेस्ड. प्रॉब्लम 1. देखो पहली प्रॉब्लम देखेंगे. यस, राइट डाउन. A particle is moving in such a way that its position is changing with time
as shown below. पोजीशन उसकी ऐसे चेंज कर रही है कुछ. पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस लिख लो यहाँ पे, अलोंग एक्स एक्सिस is changing with time as shown. Like it is a curve of x versus t. वो कुछ ऐसे चेंज करती है. मान लो पहले वो इंक्रीज करती है, फिर वो डिक्रीज करती है, फिर वो कांस्टेंट हो जाती है. It will increase up to a time of 2 seconds. It will increase up to 10 meter. Then it will decrease for next 1 second. And that value will become 6 meter. And then it will remain constant for rest of the time. For rest of the time. तो आपको निकालना क्या है? कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी between t equal to 0 to t equal to 2 seconds. Between t equal to 0 to 2 to 4 seconds. And t equal to t equal to 5 seconds. देखो we have given what? We have given the position versus time curve. और जो position versus time curve है, it is first of all increasing, linear increase दिखा रहा है, वो constant increase है. फिर उसके बाद it is decreasing constantly and then it will remain constant. It will remain constant. Position remain constant. तो हमको निकली है average velocity. Average velocity क्या होती है? That is change in position. R final minus R initial divided by time taken. R final minus R initial divided by time taken. So what is the R final to R initial? That is first case is t equal to 0 to t equal to 2 seconds. So what is the average velocity? What is the final position? The final position is 10 meter. Positive 10 minus it is how much? 0. Time taken is how much? 2 seconds. The average velocity is 5 meter per second. Or you can calculate the slope of this curve also. From second t equal to 2 to 3 seconds. What is the average velocity? Final position. What is the final position? That is 6 meter. And what is the initial position? 10.
divided by time taken is 1, so it will be minus 4 meter per second. And what is the third? Between t equal to 3 to 5 seconds. एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट. 3 to 5 सेकंड में चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना है? चेंज इन पोजीशन 0. कितना आ गया? 0 मीटर पर सेकंड. हाँ जी, समझ आया सबको? लिखो इसको. Yes. A car and a scooter is moving along direction of positive x-axis. Such that their velocity time graph is given. क्या है वेलोसिटी टाइम ग्राफ? देखो इसका एक बार. हमारी कार जो है वो इस तरीके से मूव करती है. इट्स वेलोसिटी विल इंक्रीज in 15 seconds up to 45 meter per second, and then it will become constant. And the scooter is moving with a constant speed. It is moving with a constant speed of, this is the graph for scooter, this is for car, and this is for scooter. ये क्या है? It is moving with a constant velocity of 30 meter per second. तो ये किसका ग्राफ है? It is velocity versus time graph. हमसे पूछा क्या गया? देखो, कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय scooter and car in 15 seconds. सेकेंड उसने क्या पूछा? कैलकुलेट time taken and
time taken and distance traveled when they chase each other. Or meet. जैसे यहां पर कुछ टाइम पे जाके मीट कर रहे हैं ना, तो इसका बी पार्ट में एक चेंज कर रहा हूं. पहले आप ए पार्ट देखिए. इसका ए पार्ट क्या है? कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्कूटर एंड कार इन 15 सेकेंड. तो डिस्टेंस क्या होता है? इट इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व गिवन. डिस्टेंस क्या होगा? एस. इट इज इंटीग्रेशन ऑफ मोड वी डी टी. मतलब इट इज एरिया बाउंडेड बाय कर्व. व्हाट इज द एरिया बाउंडेड? देखने वाली बात यह है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्कूटर एंड कार इन 15 सेकेंड. 15 सेकेंड में एरिया कितना बाउंड कर रहा है? एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड एरिया बाउंडेड बाय दिस हमको निकालना है. देखो, तो स्कूटर का डिस्टेंस निकालो. स्कूटर डिस्टेंस कितने पे चलेगा? कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है स्कूटर, तो या कांस्टेंट वेलोसिटी बोल सकते हो. तो उसका तो डिस्टेंस कितना हो गया 15 सेकंड में? एरिया बाउंडेड बाय रेक्टेंगल, तो इट विल बिकम 15 into 30. That is 450 meter. कार कैसे चल रही है? 15 सेकंड में जो कार है इट इज ट्रेवलिंग इन सर्कल, ट्रायंगल बन रहा है, तो उसका एरिया हो जाएगा हाफ. बेस इज 15 सेकंड, हाइट इज 45. कितना बन जाएगा? 15 into 45, 67, 675 by 2 मीटर. 675 by 2 इतने मीटर आ जाएगा आंसर. तो इसका ये कर सकते हैं. क्लियर है? लिखो इसको फटाफट, जल्दी लिखेंगे थोड़ा. लिखो फटाफट लिखो.
इसका बी पार्ट देखेंगे। कैलकुलेट टाइम at which both will meet. And also distance traveled by car up to that. देखो जब वो दोनों मीट करेंगे तो उस टाइम पर दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। डिस्टेंस बाय स्कूटर it is equal to distance traveled by car। मान लो मैं वो टाइम ले रहा हूँ which is greater than 45 डिग्री 45 सेकेंड 45 सेकेंड से बड़ा है। देखो उससे मैं क्या बता सकता हूँ, स्कूटर कितना चलेगा, स्कूटर तो टाइम टी में मान लो चलेगा 30 इंटू टी डिस्टेंस, और ये कितना चलेगा, ये चलेगा हाफ 15 सेकंड में चलता है हाफ 45 इंटू 15, फिर अगले में कितना चलेगा, कांस्टेंट हो जाएगी 45 से 45 इंटू टी माइनस 15, क्या बन रहा है ये 675/2 बन रहा है। कितना आ रहा है ये बन जाएगा 675 ठीक, कितना आ जाएगा यहाँ से 45 इंटू 15 था, कैंसिल हो जाएगा। तो इस टाइम पे जाके मीट करेंगे, मतलब 15 सेकंड के बाद आके कोई टाइम होगा बाद में। और डिस्टेंस स्कूटर कितने चलेगी इतनी देर में, हाफ प्लस जो एक्स्ट्रा टाइम में चला 15 और 40 22.5 है, तो कितना बचा 45 कांस्टेंट है और 22.5 माइनस 15 कितना बचेगा 5 और 2 7 7.5, तो यहां से हमारा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, next is a velocity time graph
is shown below. देखो मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा गिवन है, ये हमारे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है. इट इज गिवन लाइक दिस. पहले हमारी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, फिर वो कांस्टेंट रहती है, फिर वो लीनियरली डिक्रीज होती है. दिस इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ये 2 सेकेंड है. up to 10 meter per second, and then it will remain constant up to t is equal to 6 seconds. Then it will decrease up to -10 and t equal to 8 seconds. And this is again increasing in 12 seconds. अब उसमें देखो हमको निकालना क्या क्या. कैलकुलेट ए पार्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी during whole motion. Next is distance traveled by body. इसको डिस्प्लेसमेंट करो. चलो डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ बॉडी, इट इज डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग होल मोशन. Distance traveled by body during whole motion. And C is dou acceleration versus time graph. Acceleration time graph. देखो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी ड्यूरिंग होल मोशन. डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? इट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ. It is velocity time graph. तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट इज एरिया बाउंडेड बाय ग्राफ. डिस्प्लेसमेंट इज एरिया बाउंडेड बाय ग्राफ. दैट इज एरिया बाउंडेड to t equal to 12 seconds. एरिया बाउंडेड कितना होगा? अब एक चीज देखने वाली है, अगर इस एरिया का नाम मैं A1 रखूंगा तो ये भी A1 होगा, ये भी A1 होगा, इक्वल होगा. होगा नहीं होगा? इसका नाम अगर A1 है, ये भी A1, ये भी A1, ये भी A1.
और इसका नाम क्या रख सकता हूं मैं, इसका नाम कुछ भी रख देते हैं A2। ये जो एरिया बन रहा है इसका नाम मैंने कुछ भी रख दिया, लेट्स सपोज A2। अब मेरे को पता है एरिया बाउंडेड बाय दिस, हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। इन द डिस्प्लेसमेंट द एरिया बाउंडेड अबव एक्स एक्सिस टेकन एज पॉजिटिव एंड बिलो एक्स एक्सिस टेकन एज नेगेटिव। तो ये बन जाएगा 2A1 प्लस A2 माइनस 2A1। ये तो कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या A2, और A2 एरिया कितना होगा इसका, बेस इंटू इसकी हाइट। बेस कितना है 2 2 और 4, 2 2 6 4 और ये 10, तो इट इज 40। सेकंड डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा, दैट इज 2A1 प्लस A2 प्लस उसको भी पॉजिटिव लेंगे, इट इज 2A1, मतलब इट इज 4 टाइम्स A1 प्लस A2। A2 तो 40 मीटर है। A1 क्या होगा, A1 इज अ ट्राइंगल, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस 2 है, हाइट 10 है, हाफ 10 इंटू 2 20/2, 20/2 इज 10, इट इज हाउ मच 80 मीटर। नेक्स्ट हमको क्या ड्रॉ करना है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। देखो एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन होता था हमारा dv वेक्टर बाय dt, स्लोप ऑफ v वर्सेस t का, स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। और अगर t इक्वल टू 0 to 10 सेकंड में देखो तो स्लोप क्या है, व्हाट इज एक्सेलरेशन 0 to this, इट इज A1 मान लो। A1 की वैल्यू कितनी होगी, इसका स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट है पहली बात तो स्लोप, दैट इज दिस अपॉन दिस 10/2, दैट इज हाउ मच 5। यहां से यहां तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, सिक्स सेकेंड, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0, A2 मान लो। t इक्वल टू 3 to 10 सेकंड से लेके 6 सेकंड से लेके 10 सेकंड तक। स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा, इस लाइन का स्लोप नेगेटिव होगा। कितना होगा, अगर मैं इसका ये स्लोप निकालूं, ये निकालूं, ये कितना होगा, दैट विल बी 10 by this, इट इज हाउ मच, ये 8 सेकंड है, 10/2 माइनस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर ऊपर यहां से यहां तक क्या है, टेन टू 12 सेकंड में क्या आ जाएगा, अगेन स्लोप इज पॉजिटिव, क्योंकि ये लाइन उसकी तरह ही है बिल्कुल सेम, इसका स्लोप पॉजिटिव आएगा, तो एक्सेलरेशन विल कम आउट टू बी A4 2 मीटर पर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ जी आएगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का, अगर मैं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करूं, A वर्सेस T, तो 0 से 2 सेकंड के बीच में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, 0 से 2 में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर एक्सेलरेशन कुछ देर के लिए 0 है, दैट इज 2 to 6 सेकंड। फिर कुछ देर के लिए नेगेटिव है, दैट इज 6 to 10 सेकंड। फिर कुछ देर के लिए पॉजिटिव है दोबारा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा।
ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट -5 मीटर। समझ आया? जी क्लियर है? तो इस तरीके का हमारा ग्राफ इसका बन जाएगा। ये टाइम हो गया 2 सेकेंड 0 से चल के, ये टाइम हो गया 6 सेकेंड, ये टाइम हो गया 10 सेकेंड और ये टाइम हो गया 12 सेकेंड। तो इस तरीके का हमारा इसका ग्राफ बन जाएगा। क्लियर है? लिखो इसको।